So we are going to discuss graph theory. Graph theory, we had discussed graph theory in like first 2 weeks very briefly when we were discussing handshaking problem. तो handshaking problem का हमने graph draw किया था and we discussed about basic terminology of graph. Empty graph क्या होता है, full graph, complete graph क्या होता है, and these kind of things we had discussed it. And then assignment maybe you did some questions related to graphs. Assignment 1 के अंदर. So now we will discuss in little more detail in graphs. So graphs, we can solve many problems using graph theory. For example, अगर हमारे पास एक network है, computer network है, so we can represent computer network with the help of graph, different nodes, entities आपस में communicate किस तरह कर रही हैं, या it could be some transportation network, road, या rail network, I mean any kind of thing कि different cities and different destinations, how they are connected to each other, how we can move from one point to another point. ठीक हो गया. Similarly, we can define any kind of relationship between nodes and then edges between those nodes will represent our relationship. For example, social media. So how different people, different nodes are connected to each other. Social media network हमारा बन जाता है. It could be more abstract level thing. For example, in a project management, which phase is going to start after which phase? ये आपका I mean, if you are going to write a big computer program, so उसमें भी हो सकता है कि which module should execute after which module, or which module is going to trigger another module, so we can make a graph of that thing as well. So graphs are like something interesting. We should study. Is something interesting. So again, we are going to start with a toy example, and then we will make things more abstract, more generalized. We will going to make some conjecture formula like that. So I'm going to share my slides with you people. So I hope you can see the slides. Adil, slides nazar aa rahi hain aapko? Abdullah? Yes, sir. aa rahi hai nazar. Oh, okay. Thank you, Veda. So we are going to discuss some basics of graph theory. Basics कुछ तो आपको पता है. We will discuss some fundamental important result. And actually, we knew this result, but we are just going to look it in a different way. Let's see. So, okay, let's start graphs. So graphs, we represent graphs in notation with G. G stands for graph, and graph consists of vertices and edges. So set of vertices, set of nodes, set of vertices को हम V कहते हैं, जो हमारी different entities हैं. Mostly we represent it with V. And set of edges, nodes के दरमियान edge जो exist करते हैं, उसको हम E के साथ represent करते हैं. So capital V is set of vertices and E is set of edges. So graph को हम represent करते हैं G of VE के साथ. A graph is defined on vertices and edges. Let's see. So we are going to define a problem. Again, like Alice or someone is going to throw a party, and in party there are some number of people. Suppose there are 51 people. We say there is always a person who knows an even number of other people. अगर हमारे पास इक्यावन लोग हैं पार्टी में, एक शख्स ऐसा होगा who knows some even number of other people. वो
इवन नंबर ऑफ पीपल को जानता होगा. So let's look at it, analyze this thing. अगर कोई ऐसा है जो किसी को नहीं जानता, so how many people he knows? Zero number of people. So this is the case, he knows even number of people. अगर कोई zero लोगों को जानता है, so it means he knows even number of people. अगर कोई किसी एक को जानता है, then he knows odd number of people. अगर कोई दो लोगों को जानता है, he knows even number of people, and so on. So अगर कोई शख्स सब लोगों को जानता है, if there is a person who knows each and every person in the party, तो 51 people हैं, so वो अपने आप को तो हम उसको केस नहीं कंसिडर करेंगे. So he knows 50 other people. So 50 is even number. It means he knows even number of people. यहाँ पे जस्ट वो पिछली क्लास में एक लंबी डिस्कशन शुरू हो गई. वो कह रहे थे जीरो जीरो ऑड है या इवन है. सो आई शुड आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू पीपल कि जीरो ऑड है या इवन है. उस्मान, जीरो ऑड है या इवन है? सर जीरो नहीं आइडिया, मैंने पिछली क्लास में ली आपकी. नहीं, पिछली क्लास में तो डिस्कस ही नहीं किया था. तो जिस भी क्लास में किया मैंने, आप काफी क्लास में किए हैं, आइडिया नहीं है जीरो ऑड है कि इवन. नहीं, ये तो बेटा हाई स्कूल में डिस्कस किया था. हाई स्कूल में भी नहीं, उससे भी पहले डिस्कस किया. प्राइमरी स्कूल में डिस्कस किया था. सर फिर तो उस वक्त भी आपने मिस कर दी थी. कोई बात नहीं, इस वक्त मिस हो जाती चीजें. नहीं आइडिया. अब अब्दुल्ला या अरहम इज अ गुड स्टूडेंट. वैसे इवन ही कंसीडर करते हैं हम तो जीरो को. अच्छा जी, इवन है सर. जीरो इवन है. ओके, सो इवन है तो क्यों है? ये चीज ना अभी एक बार क्लियर करें. जो आप 8 स्टूडेंट क्लास में, आपको क्लियर हो जाना चाहिए. बाकी जो 24 है वो नहीं है क्लास में. सो अब्दुल्ला कहते हैं कि जीरो इज इवन. ओके, अगर इवन है तो इवन क्यों है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स? इसको 2 से डिवाइड मॉड लें 2 से तो जीरो आए उसका. जिसका मॉड मींस रिमाइंडर, यानी 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. देन दैट नंबर इज इवन. यानी जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तभी रिमाइंडर 0 आता है ना. अगर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा. सो इफ रिमाइंडर इज 1, इट्स ऑड. अगर रिमाइंडर 0 आता है देन इट्स इवन. रिमाइंडर 1 आता है देन इट इज ऑड. सो अगर 0 को 2 से डिवाइड करें, सो वी गेट रिमाइंडर 0. ठीक हो गया? ठीक हो गया. 0 divided by 2, so answer is 0. So remainder भी 0 आएगा. अगर 1 को 2 से डिवाइड करें, so 1 divided by 2, so quotient is 0. लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाते हैं, so 1 is odd. Similarly, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd, and so on. नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह है कि 1 -1 is odd, -2 is even, and so on. So even odd number alternately change होते जाते हैं. एक इवन, एक ऑड, एक इवन, एक ऑड. ठीक हो गया? So this thing should be very clear कि 0 इवन नंबर होते हैं. So usually हम डिफाइन इवन और ऑड को करते हैं. इवन को हम 2k लिख सकते हैं, इस मल्टीपल ऑफ 2. ऑड क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर आप एक ऐड कर दें. यू कैन राइट डाउन -1 एज वेल. ठीक है, तो 2k + 1 या 2k - 1 इज ऑड नंबर. 2k is even, 2k + 1 is odd. Okay, so even odd का clear हो गया. So if someone, जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें, if someone knows 0 number of people, that means he knows even number of people. If someone knows each and everyone, तो एक कॉमन हो गया. तो if he knows 50 people, then he knows even number of people. लेकिन इसके दरमियान में भी तो कुछ होंगे, कुछ odd होंगे, कुछ even होंगे. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमेशा इस तरह के केस होगा कि whenever there are 51 people, 51 is odd number. Whenever there are odd number of people, there is always a person who knows even number of people.
इसको देखते हैं। अगर हमारे पास 50 लोग हैं, जो लोग सबको जानता होगा, so he will know 49 people. If we have 49 people, so the person who knows each and every person, so he will know 48 people. And I mean, this 51 is not important. Important thing is numbers are even or odd. So let's see. So इसको हम जरा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. At a party with an odd number of people. So 51 की जगह हमने कह दिया odd number of people. So in a party with odd number of people, there is always a person who knows an even number of people. एक आदमी ऐसा होगा जो even number of people को जिसके साथ उसकी जान पहचान होगी. So 51 is a big number. अगर हम तमाम का रिलेशनशिप देखने बैठ जाएं तो it would be तमाम possible relations. वो लिस्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. If we are counting it, so this counting will be तमाम possible cases. These will go in thousands. तो लिस्ट करना इतना आसान. ये अपने समझने के लिए हम जरा थोड़े number of people ले लेते हैं. Suppose we have 5 people. As usual, Alice, Bob, Carl, Diane, and Eve. So suppose we have 5 people. So they know each other in certain ways. Suppose Alice knows each and everyone, so Alice knows the rest of the 4 people. Bob knows 2 people, Alice and Carl. Carl knows 3 people. Diane knows only Alice, so Eve knows 2 people. So Alice knows 4 people. Bob also knows 2 people. Eve knows 2 people. So they know even number of people. Diane knows 1, so she knows 1 person. Carl knows 3, so Carl knows 3 people. Odd number of people. So कुछ odd number of people को जानते हैं, कुछ even number of people को जानते हैं. So our statement that there is a person who knows even number of people. So इस case में it is valid. Yes, there are some people like Alice, Bob, and Eve who knows even number of people. लेकिन क्या ये हमेशा होगा? So one way is to list down all possibilities, जो भी possible relationship हो सकते हैं, and other way is to draw a graph, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है सामने. So this friendship graph is in front of you. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ. हमारे पास नोड्स हैं, उनके दरमियान एजेस हैं. So edges की कोई डायरेक्शन नहीं है. So it is like bilateral relationship. जो रिलेशनशिप ए का बी से है वही रिलेशनशिप बी का ए से है. Okay. So let's quickly discuss some graph theory basic concept. ये हम पहले देख चुके हैं. So graph क्या है? If we have some entities, nodes, we call these vertices. In vertices के दरमियान आपस में कोई relationship है, so that relationship is represented by an edge. So graph consists of vertices and edges. For example, जहाँ पे आपको 3 graphs नजर आ रहे हैं. So पहला graph between A, B, C, D. So there are no edges. So this is called empty graph. ठीक हो गया? That's fine. अगले graph, this is special kind of graph. So we see कि around 1 there is a loop, self loop, or 2 or 4 के दरमियान there are 2 edges. Okay, and then there is 1, 2, 3, 4, W, X, Y, Z, and 4 nodes, and we have all possible edges. Each node is connected to every other node. इस तरह के ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं. So जहां पे हम डिफाइन करते हैं सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ क्या होता है? When there is no multiple edges, जिस तरह ये दरमियान वाले ग्राफ में 2 edges हैं, कोई मल्टीपल एजेस ना हो और कोई सेल्फ लूप ना हो, वो सिंपल ग्राफ होता है. सिंपल ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होता, कोई मल्टीपल एजेस नहीं होते. फाइन. सो फॉर एग्जांपल ये जो 3 ग्राफ्स हैं, इसमें पहला ग्राफ इज सिंपल ग्राफ, सेकंड ग्राफ इज नॉट ए सिंपल ग्राफ, थर्ड ग्राफ इज सिंपल ग्राफ. Okay, so directed graph, often we come across directed graph as well.
when edge has a direction कि आपका जो edge है वो A से B की तरफ जा रहा है, तो B से A की तरफ वो नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक वन वे ट्रैफिक। या आपका फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो आपका हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाता है, सो इट्स वन वे कम्युनिकेशन, वन वे रिलेशनशिप। सो हम एक एरो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंपल ग्राफ होता है वो डायरेक्टेड नहीं होता, वो अनडायरेक्टेड होता है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ के एजेस के ऊपर एरोस लगे हैं, ठीक। सो दिस एरोस टेल अस के कौन सा कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कमोडिटी, आपके रिसोर्सेज किस नोड से किस नोड की तरफ फ्लो करते हैं, उनकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। सो इन जनरल वी डिस्कस अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी एरोज। सो जो सिंपल ग्राफ होते हैं वो अनडायरेक्टेड होते हैं। सो वी हैव edges between two nodes u and v. Mostly we represent nodes with small letters, edges also with small letters. जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल वी के साथ वर्टिसेस, कैपिटल ई सेट के साथ को वो सेट ऑफ एजेस, तमाम एजेस को लिस्ट डाउन करते हैं तो उसको कैपिटल ई से लिखते हैं। जो इंडिविजुअल एजेस होते हैं, इंडिविजुअल नोड्स, उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो we say E is incident with U and V, means E एक एज है दो नोड्स के दरमियान। दो नोड्स कौन से हैं? एक नोड U है, एक V है, ठीक हो गया। सो U and V are end points of our edge E. सो कोई भी दो नोड्स जो आपस में कनेक्टेड हैं डायरेक्ट एज के साथ, सो वी कॉल दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर नेबर्स टू ईच अदर। सो कोई नोड जितने नोड्स के साथ कनेक्टेड होगा, ऑल दोस नोड्स आर नेबर्स, इट्स नेबर्स। सो वी डिफाइन ए टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज कि एक नोड कितने नोड्स के साथ कनेक्टेड है, उसके कितने नेबर्स हैं। सो नंबर ऑफ नेबर्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स के साथ, एक नोड एक वर्टेक्स से कितने एजेस निकल रहे हैं, उसके साथ कितने एजेस लगे हुए हैं, इंसिडेंट है उसके ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर वी कैन सी this is not a simple graph because there are multiple edges and self loops की डिग्री क्या है इसकी। so a की डिग्री we can count how many edges are incident on it, 1 2 3, so इसकी डिग्री 3 है। c की so 1 2 3 4 and 5 जो सेल्फ लूप है, सो इस ये 2 डिग्रीज इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि इससे निकल रहा है और वापस इस पे आ रहा है, सो इट इज कंसिडर्ड एज डिग्री 2। सो 1 2 3 4 5 डिग्री 5 है, ई की डिग्री 1 है, एफ की डिग्री 0 है, देयर इज नो नेबर। डी की डिग्री 2 है, बी की डिग्री इज 1 2 3, इस डिग्री इज 3, ठीक हो गया। So last time in second lecture we defined complete graphs. So complete graph क्या है कि आपके पास जितने भी number of nodes हैं उन nodes में each node is neighbor to other node. Each node is directly connected to all other nodes. Complete graph को हम K के साथ represent करते हैं, KN. KN means a complete graph on n nodes. So here you can see K1, a node with the complete graph, a node with one vertex, बस खुद ही है। K2, so there are 2 nodes और तमाम possible edges are here, K3, K4, K5। so हमने किया था handshaking problem में कि कितने handshakes possible हैं between n people if each and every person is going to handshake with other person. So in other words, each and every node is connected to other nodes. Each and every node is connected to each and every other node. So number of handshakes या number of edges हमने निकाले थे, first assignment में भी किए थे, second third lecture में, so it was n into n minus 1 divided by 2. So here we can see, for example, 5, so 5, n is equal to 5, so 5 into 5 minus 1, which is 4, so 5 into 4 divided by 2, so this is going to be 10 possible edges there. So K4,
4 into 3 divided by 2, 6 edges are there. We define another kind of graph is called cycle graph. कि जितने भी आपके पास nodes हैं, n nodes हैं, so they form a cycle. They are connected to each other in form of a cycle. So we can see we represent cycle graph with Cn, a cycle on n nodes. So this is cycle on 3 nodes. Cycle just circuit भी आप कह सकते हैं कि आप एक नोड से शुरू हो चलना शुरू करें, so you will come back to the first node. So C4, C5, C6, and so on. You can define Cn. This is called wheel graph. So wheel graph क्या है? Cycle graph के अंदर we have put a center node. एक hub उसके अंदर हमने रख लिया. जिस तरह wheel के अंदर दरमियान में axle होता है, and all spokes are connected to axle. दरमियान में hub है और तमाम points they are connected to the hub. So we have a cycle, and in the middle we have central node, hub node. So all nodes are connected to this hub. So this form a kind of wheel. So this is W3, a wheel graph on 3 nodes, W4, W5, W6, and so on. So we form a cycle graph and we place a hub node in the middle. So this form a wheel graph. One important graph is bipartite graph. Bipartite. Bi means two, partite parts. So it's a graph with two groups. So usually we just represent left group and right group. So over here you can see some nodes are on the left, some nodes on the right. जो एक ही group के nodes हैं, the nodes belonging to same group, they are not connected to each other, and they have relationship with other nodes. It's just like some company is going to hire some employees, candidates. So companies, they are looking for candidates. So candidates एक hiring है और दूसरे being hired हैं. So companies, they will form one side of the bipartite graph. Candidates with their skills, they are on the other side of the graph. जहाँ पे required skill और available skills आपस में match करेंगी, we can draw a line and edge. So this is bipartite graph. So bipartite graph में एक ही group के nodes आपस में connected नहीं होते. They have relationship, they have edges with other groups node. So अगर तमाम possible nodes अगर तमाम possible edges available हैं bipartite में, so it's called complete bipartite graph. So we call it KMN. कि पहले ग्रुप में m edges, m nodes हैं, पहले ग्रुप में m nodes हैं, दूसरे ग्रुप में n nodes हैं. ये जो m nodes हैं, ये आपस में नहीं connected, लेकिन ये connected हैं बाकी के n nodes के साथ जो दूसरे ग्रुप में हैं. Similarly, those in second group, n nodes, they are not connected to each other, but they are connected to the m nodes of first group. So complete bipartite graph KMN. नीचे बने हुए हैं K22 के दोनों साइड पे दो nodes हैं, and they are connected to each other completely. K32 and similarly K33. So here are some examples of bipartite graph. These may not be complete, so we can see on the left are bipartite. ये दो groups बने हैं, आपस में ये connected हैं. Similarly, in this second, we have 3 nodes here, 2 nodes here, and they are connected across each other. तीसरा एक cycle है on 6 nodes, and we call it bipartite. क्यों? We can define some groups. For example, this node, and this node. They are not connected to each other, but they are connected to other group. Other group is this node, and this node. So again, these 3 nodes are not connected to each other, but they are connected with other groups. So we have made 2 groups. Alternate nodes are in one group, and on the other side, the बाकी के alternate nodes हैं, they are in other group. So they are connected to nodes of other groups, and they are not connected to each other. अगर हमारे पास odd number of nodes per cycle होगा, so we cannot define them as bipartite.
because we cannot divide them into two such groups के एक ही ग्रुप के अंदर वो आपस में नॉन कनेक्टेड हो, हम इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते. So these are just some examples of bipartite graph. So here is one more example. So you have to identify which one is bipartite, which one is not. Okay, let's come back to our problem. हमारा problem क्या था? At a party with an odd number of people, there's always a person who knows an even number of other people. So इसी को हम अब graphs की terminology में define करते हैं. If a graph has an odd number of nodes, a graph है उसमें odd number of nodes हैं. A graph has odd number of nodes, so it means we have odd number of people. Then it has a node, इसमें there is a person, it has a node with even degree. There is a node with even degree, means there is a person who knows even number of people. Okay, so we have to prove this result. A graph with odd number of nodes, there is a node with even degree. Let's see. We have over here some examples of graph which have odd number of nodes, and let's look at the degrees. हमने randomly कुछ edges draw किए हैं. So if a node has even degree, we represent it with black node. If it has odd degree, we represent it with white node. पहले graph को देखें, it's a cycle on 5 nodes. Then each and every node has degree 2. So there are nodes with even degree. So next node we have, हमने इसी के अंदर we have draw 2 extra edges. तो अब क्या हुआ कि 4 nodes ऐसे हैं जिनकी odd degree है. इसकी degree 3 है, degree 3, degree 3, degree 3, and this node has degree 2. So there is a node with degree 2 even degree. This is a node. This is a graph on 3 nodes. So 2 nodes has degree 1. Degree 1 means odd degree. And 1 node is with degree 2. Degree 2 means it has even degree. Then next there is a graph on 7 nodes. Odd number of nodes, 7 nodes. And each one has degree 2. Actually, this is a cycle on 7 nodes. उसको हमने twist करके star की शक्ल में बनाया हुआ. Otherwise, it's just a cycle. So it's a graph on 7 nodes. Each node has degree 2. So it means all nodes has degree 2. There is a node with degree 2. Next is 5 nodes. जिस जो एक chain के अंदर इसका हम path या tree भी कहते हैं path usually we call it path. So it's path graph. इसमें जो n nodes हैं उनकी degree 1 है, they have odd degree. जो दरमियान के 3 nodes हैं उनकी degree is even. And last पे we can see there is a graph on 7 nodes. It is just dissected into 2 parts. ये एक ही graph है. So we have 7 nodes. There are 4 nodes with odd degree and 3 nodes with degree 2. हम पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ रही है. पहले ग्राफ में 5 नोड्स हैं जिनकी डिग्री इवन है. दूसरे में एक नोड है जिसकी डिग्री इवन है. तीसरे में भी there is 1 node with even degree. Then we have 7 nodes with even degree. Then we have 3 nodes with even degree, and then we have 3 nodes with even degree. Can we say this result that if a graph has odd number of nodes, then the number of nodes with even degree, ये तो हमें नजर आ रहा है कि even degree वाले nodes हैं. Number of nodes with even degree वो odd होंगे. जो हमारे पास nodes हैं having even degree, these nodes, ये कितने nodes हमारे पास हैं, ये odd हैं. So जैसे पहले ग्राफ में 5 हैं, then we have 1, 1, 7, 3, 3. क्या ये हमेशा होगा? हमेशा होने के लिए we need to prove it. इसी का अगर हम काउंटर पार्ट देखें कि if अभी तो हमारे पास है if a graph has odd number of nodes, then the number of nodes with even degree is odd. How about even degree? If we have even number of nodes, then the number of nodes with even degree is
इवन। फॉर एग्जांपल जहां पे हम देख सकते हैं ये 4 नोड्स हैं, 2 नोड्स की और डिग्री है, 2 नोड्स की इवन डिग्री है। So if number of nodes with even degree is even, तो number of nodes with odd degree भी even ही होंगे ना, even plus even is even. So जहाँ पे हमारे पास 4 nodes with even degree हैं, 2 nodes with 1 2 3 odd degree है, यहाँ पे हमारे पास चारों nodes की odd degree है, यहाँ पे हमारे पास all nodes 6 nodes they have even degree. So there are 2 nodes, they have 0 degree, so even degree. So all 4 nodes are having degree 2. So we have even number of nodes in each of these graphs. We have total number of nodes are even. And number of nodes having even degree, that's also even. Okay. So पहला result क्या हुआ? If a graph has an odd number of nodes, the number of nodes with even degree is odd. तो odd degree वाले कितने होंगे? वो even होंगे, because even plus odd is odd. So यहाँ पे क्या है? Number of even number of nodes, total number of nodes even है. Number of nodes with even degree is even. The number of nodes with odd degree is also even, because even plus even should be odd. So even degree nodes are even, so odd degree nodes should be even. So it means number of nodes with even degree is always 1. We can say in any graph the number of nodes with odd degree is always even. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम थ्योरम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री इज इवन. सो यहाँ पहली स्टेटमेंट में क्या है? नंबर ऑफ नोड्स विद इवन डिग्री इज ऑड, तो फिर नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री शुड बी इवन. और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स विद इवन डिग्री इज इवन, so number of nodes with odd degree should be also even. So in general we can say in any graph number of nodes हमारे पास odd है या even है. The number of nodes with odd degree should be even. Number of nodes with odd degree should be even. तो ऊपर वाले दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें we can say number of nodes with odd degree is even. क्या हम इसको अप्रूव कर सकते हैं? Let's see. So let's start with an empty graph. So empty graph में number of nodes with odd degree is 0. Number of तमाम nodes की डिग्री 0 है, ठीक हो गया? तमाम nodes की डिग्री 0 है, तो तमाम nodes की डिग्री even है. तो number of nodes with odd degree तो किसी की भी नहीं है. So कितने number of nodes with odd degree में हमारे पास 0. 0 is even number. So number of nodes with odd degree is 0, even. Now we start building up the graph. हम एक edge draw करते हैं. First case you can see. We draw one edge between any 2 nodes. अब इस नोड की डिग्री odd हो जाएगी. पहले 0 थी ना, तो अब इसकी डिग्री 1 हो गई. और जिस नोड के साथ ये एज बना रहे हैं उसकी डिग्री भी 1 होगी. तो ये 2 नोड्स हैं जिनकी डिग्री 1 होगी. तो देयर आर 2 नोड्स विद डिग्री 1. ठीक है. सो 2 नोड्स विद डिग्री 1. सो नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री इज 2. स्टिल इवन. पहले 0 था, अब 2 है. तो जब भी हम एज ड्रॉ करते हैं, जब भी हम एक एज ड्रॉ करते हैं, तो ये 2 नोड्स की डिग्री को चेंज करते हैं. जिन 2 नोड्स के दरमियान हम एज ड्रॉ करते हैं उन दोनों की डिग्री चेंज हो जाती है. अगर तो उनकी डिग्री पहले ऑड थी तो अब इवन हो जाएगी, एक बढ़ गई ना. और अगर उनकी डिग्री इवन थी तो अब ऑड हो जाएगी, बिकॉज इवन से आगे एक बढ़ाने से वो ऑड हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं उनकी पैरिटी चेंज हो जाती है. पैरिटी इज लाइक दे आर इवन और ऑड. उनकी डायरेक्शन क्या है? सो उनकी पैरिटी चेंज हो जाती है. इफ दे आर इवन तो एज हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर उनकी डिग्री इवन है हम एज ड्रॉ करते हैं तो उनकी डिग्री एक बढ़ जाएगी, तो इवन से वो ऑड हो जाएगी. और अगर उनकी डिग्री ऑड है तो एज ड्रॉ करने से डिग्री
ऑड से इवन हो जाएगी, सो चेंज हो जाएगी. So whenever like we are in the middle of drawing this graph, whenever we are drawing an edge, तो वो जो जिन दो वर्टिसेस के दरमियान एज ड्रॉ करेंगे, जिन दो वर्टिसेस के दरमियान हम एज ड्रॉ कर रहे हैं, उन दो वर्टिसेस की डिग्री क्या हो सकती है? या तो दोनों की डिग्री पहले ड्रॉ करने से पहले, एज ड्रॉ करने से पहले, या तो दोनों की डिग्री इवन होगी, या दोनों की डिग्री ऑड होगी, या तीसरा केस क्या हो सकता है, एक की इवन होगी एक की ऑड होगी. ये तीन केस पॉसिबल है ना. या तो दोनों नोड्स इवन डिग्री वाले होंगे, या दोनों नोड्स ऑड डिग्री वाले होंगे, या एक नोड इवन डिग्री का है और एक नोड ऑड डिग्री का है. तो जब हम एज ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है? सपोज के क्योंकि हम जीरो से शुरू हैं, सो एम्प्टी ग्राफ से वी नो के नंबर ऑफ nodes with odd degree is 0 even. So suppose number of nodes with odd degree are even. हमारे पास कितने nodes हैं जिनकी डिग्री odd है? वो हमारे पास कोई even नंबर में है. Okay, and now we are drawing an edge. Suppose के दोनों जो vertices हैं, दोनों vertices जिनके दरमियान हम edge draw कर रहे हैं, the end point vertices of edge we are going to draw both have even degree. उनकी पहले से डिग्री इवन है. तो अब क्या होगा? दोनों की डिग्री ऑड हो जाएगी. ठीक हो गया. सो नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री बढ़ गए. कितने बढ़े? 2 से बढ़े. सो अगर पहले नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री वर इवन, तो अब 2 का इजाफा हो गया. तो even plus 2 is still an even number. So it means number of nodes with odd degree will remain even. ठीक है. Second case is if both end points of new edge they have odd degree, दोनों की डिग्री ऑड है. जब हम एज ड्रॉ करेंगे तो दोनों की डिग्री अब एक एक बढ़ जाएगी. सो ऑड से उनकी डिग्री क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी. अब इवन डिग्री नोड बढ़ गए. नोड तो हमारे पास वही है. अगर ये दोनों नोड्स इवन में चले गए तो जो नंबर ऑफ ऑड डिग्री नोड्स थे वो 2 कम हो गए. ठीक है. दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम ऑड डिग्री नोड्स टू इवन डिग्री नोड्स. तो जो ऑड डिग्री नोड्स हमारे पास पहले थे उससे हमारे पास 2 नोड्स कम हो गए. तो अगर पहले इवन थे तो अभी फिर इवन रहेंगे, बिकॉज इवन नंबर -2, so it still remain an even number. ठीक है जी. सो तीसरा केस क्या है कि जो हम एज ड्रॉ कर रहे हैं उसका एक एंड पॉइंट इवन डिग्री है, दूसरा एंड पॉइंट ऑड डिग्री नोड है. तो जब ये ड्रॉ करेंगे एज, जिसकी इवन डिग्री है उसकी एक बढ़ जाएगी तो वो ऑड डिग्री हो जाएगा, और जिसकी ऑड डिग्री है उसका एक डिग्री बढ़ाने से उसकी डिग्री इवन हो जाएगी. सो इवन डिग्री नोड एक बढ़ गए, ऑड डिग्री नोड एक कम हो गया. इवन डिग्री नोड एक बढ़ गया और ऑड डिग्री नोड एक कम हो गया. सो जो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास है, जो ऑड डिग्री नोड है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो ऑड डिग्री नोड थे हमारे पास जो इवन थे उसमें से एक कम हुआ, वो इवन डिग्री बन गया, और इवन डिग्री नोड्स में से एक बढ़ गया, वो ऑड डिग्री बन गया. सो नंबर ऑफ ऑड डिग्री नोड्स उतने ही रहेंगे. सो अगर वो पहले इवन थे तो अभी भी इवन रहेंगे. हेंस वी कैन से in any graph the number of nodes with odd degree is always even. So we can conclude this result. ठीक है. इसको हम यहाँ दोबारा भी लिख लेते हैं. Okay. So we make this conclusion: in any graph, the number of nodes with odd degree is always even. ठीक है. So इसके बाद there is an other result. This we had done in handshaking as well. The sum of degrees of all nodes in a graph is twice the number of edges. So it's just like if you remember number of handshakes. तो अगर हर एक इंडिविजुअल हैंडशेक्स हम काउंट करते थे और टोटल हैंडशेक्स काउंट करते थे
So individual handshakes were 2 times actual handshakes. क्योंकि कोई भी actual handshake it involved 2 persons. तो यहाँ पे भी उसी तरह है. जब हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री is related to each individual node. और edge जो होता है, it is connected to 2 nodes. So एक edge आपकी एक एज आपके 2 नोड्स की डिग्री में इंक्रीमेंट करता है. इट्स रिलेटेड टू डिग्री डिग्री ऑफ 2 नोड्स जिन पे ये इंसिडेंट होता है. तो एज आपका एक होगा, डिग्रीज आपकी 2 बनेंगी. यू और वी के दरमियान एक एज है, तो डिग्री ऑफ यू में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज, और डिग्री ऑफ वी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो अगर हम हर एक नोड की डिग्रीज को ऐड करें, सो इट विल बी 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस. इसलिए जब वो हम एक्चुअल हैंडशेक्स काउंट करते थे, वी यूज्ड टू डिवाइड इट बाय 2. ठीक. सो इससे हम ये ऊपर वाला रिजल्ट भी डिड्यूस कर सकते हैं. किस तरह? सो सम ऑफ डिग्रीज इन एनी ग्राफ इज एन इवन नंबर बिकॉज इट्स 2 टाइम्स द सम ऑफ डिग्रीज. ठीक है. So sum of degree is 2 times the number of edges. Sum of degree. So sum of degree is multiple of 2. So it's 2 times number of edges. So 2 times number of edges means multiple of 2. So sum of degrees is even number. So sum of degrees in any graph is an even number. So if you omit the even terms from this term, sum, we still get an even number because even minus even is an even number. So sum of the odd degree is even, but this is possible only if the number of odd degrees is even. So sum of odd degree should be even because it's going to be an even number. So odd plus odd is always even. So हमारे पास ऑड डिग्री वाले जितने भी नोड्स हैं, इफ यू ऐड देम एंड दे आर इवन नंबर, बिकॉज इवन डिग्री वाले जितने भी नोड्स होंगे उनका सम तो हमेशा इवन ही रहेगा ना. अगर वो 1 है या 2 हैं या 3 हैं या 4 नोड्स हैं, उनकी इवन डिग्री है, सो इट शुड बी ऑलवेज एन इवन नंबर. तो जो ऑड डिग्री वाले नोड्स हैं, तो देयर सम शुड आल्सो बी इक्वल टू सम इवन नंबर, बिकॉज टोटल नंबर हमारे पास इवन है. इवन डिग्री वाले नोड्स का इवन डिग्रीज भी हमारे पास इवन है, तो ऑड डिग्री शुड बी इवन, वरना वो फिर इवन प्लस ऑड इज नॉट इवन ना. सो इवन प्लस इवन शुड बी इवन. सो सम ऑफ ऑड डिग्री इज इवन. सो इफ सम ऑफ ऑड डिग्री इज इवन, इट मींस नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री शुड बी इवन, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इज इवन. अगर हमारे पास ऑड डिग्री नोड्स ऑड में होंगे तो उनका सम हमारे पास फिर इवन नहीं आएगा, ऑड आ जाएगा. सो दिस शोज के नंबर ऑफ नोड्स विद ऑड डिग्री शुड बी इवन. ठीक है. सो यहाँ से वी हैव गॉट दिस हैंडशेकिंग थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया. ये ऊपर लिखा हुआ है थ्योरम 7.1.2 कि सम ऑफ डिग्रीज इन अ वर्टेक्स इज 2 times number of edges. So each edge contributes exactly twice to the sum of degrees. क्योंकि कोई भी edge है वो 2 nodes की ठीक. So I think we should stop here and we will continue in next lecture further about the graphs. I would say that you should go through section 7.1 and 7.2 of the textbook, and there are some practice problems in section 7.1, so try to attempt those problems as well.